The students, it is the fourth video for the week 12, and we are discussing theory of utilitarianism presented by the Jeremy Bentham. In the previous video, I discussed the natural rights and the discussion on the natural law, and also expressed that how Jeremy Bentham is different in approach from the contemporary philosophers. Let's start our discussion about utilitarianism. Utility means benefit, the instant profit, clear, or something that brings happiness, mirth, salvation, comfort, practically into the lives of people. That approach is utilitarianist approach. In 19th century, when England and the Western powers started capturing the other lands, and they had a principle that everything is fair in love and war. Love and war means everything is fair. In love and war means हर वो चीज़, हर वो काम दुरुस्त है जो आप अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए करें या आप अपने आप को बचाने के लिए करें. So they, according to this policy, started doing things practically what they can bring. Otherwise, in old Christianity, the people, as you have seen, वरना जो कदीम ईसाई ख्यालात हैं उसके मुताबिक इंसान इस दुनिया में आर्जी तौर पर आया और उसको खुदा की इबादत करनी चाहिए और ये दुनियावी मामलात से हट जाना चाहिए, ये माल और दौलत और इन चीज़ों से, और उनमें रहबानियत का तस्वुर था. फाइन. एंड अंडर दिस प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द पीपल, जनरल पब्लिक को ये कहा जाता था, जबकि बादशाह और बड़े बड़े कलीसा और ये पोप शोप ये जो थे ये दुनिया की हर एक नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होते थे. बट इन 18th century the logical thinkers started saying that by these philosophies of abstract thoughts and natural thoughts and socialism, social thoughts, they actually deprive us from the utility. Fine. Thereby, they advocated this policy. Fine. According to utilitarianism theory, चूँकि ये theory 18th century में आई, तो उस वक़्त इनकलाब फ्रांस आ चुका था, सनती इनकलाब आ चुका था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था. फाइन. The French Revolution emerged the thought of liberty, fraternity and equality. क्लियर. मसावात और इंसानी हकूक़ की जो रूह थी वो उन्होंने यूरोप के अंदर फूंक दी, एंड एवरीवेयर द पीपल डिमांडेड. जबकि दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनें बनी, तो उससे जो लोग काम करने वाले थे खेतों में और बढ़ई थे और दस्तकार थे, उनकी ज़िंदगी जो है वो तंग हो गई. सो दैट रिप्लेस्ड दिस, एंड देयर प्रॉब्लम्स of social and economic problems grew harder and harder. This theory of utilitarianism was very effective at that time, that in all directions, at social level, government sector, constitutional front, and as well as in economic front, कि भाई कानून बनाना है तो लोगों के बेनिफिट का होना चाहिए,
आपने कुछ सनद लगानी है, लोगों के बेनिफिट की होनी चाहिए। कुछ भी करना है, दैट मस्ट बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। क्लियर? सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द theory of utilitarianism. Well, Bentham has constituted two pillars of the theory of utilitarianism. Bentham अपने यूटिलिटेरियनिस्ट थ्योरी को दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो उसका पहला उसूल जो मैंने आपको बताया था, दैट नेचर हैज डिवाइडेड हिम इन कंट्रोल ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी में दो चीजें इंसान को कंट्रोल करती रहती हैं। वो जो मशहूर फिल्म आपने देखी होगी ना, कभी खुशी कभी गम, दिस इज एक्चुअली द very short expression of Bentham's theory of utilitarianism. 14 players are sense, wealth, skill, amity, good fame and name, power, piety, benevolence, malevolence, memory, imagination, expectation, association, relief. These are the 14 players. वो कहता है कि हवास, दौलत, हुनर, दोस्ती, अच्छी शोहरत, ताकत, परहेजगारी, खैर ख्वाही, बदख्वाही, याददाश्त, तसव्वुर, कयास, तवक्को, रफाकत, आराम, निजात, ये इंसान के लिए खुशियों के बायस है। अब वो 12 दुख बयान करता, 12 पेन्स जो कि इंसान के लिए दुख का बायस हो सकते हैं। नंबर 1, पॉवर्टी, deprivation, sense, awkwardness, enmity, bad name or ill name, piety, benevolence, malevolence, memory, imagination, expectation, association. वो कहता है कि ये जो चीज़ें बयान की जा रही हैं, ये चीज़ें फ़ायदा भी दे सकती हैं और नुकसान भी दे सकती हैं। 12 दुख क्या है? तंगदस्ती, हवास, बदसलीकापन, दुश्मनी, बदनामी, पारसाई, खैर ख्वाही, बदख्वाही, याददाश्त, तसव्वुर, तवक्को, रफाकत. They are the things according to Bentham's theory, one way or other applied. Bentham has the 3 levels of the utilitarianist theory. Number 1, whatever the law, dictum, policy you have to precise, it must be clear, specific. It must be clear, specific, and concise. Number 2, it must be unique, one, and it must be supported by practicable and munificent ethical grounds. Fine. So this is all with the theory of utility of the human beings, and there are some critical values points which have been added with the theory of the critical. Number 1, only the critics express simply happiness and sorrows are not controlling the lives of human beings. There are other things also which are controlling. Although not all the people in the society just do things for their own benefits, as per the Sigmund Freud expressed. There are people who are doing things for the
sake of the other spirituals, जैसे लोग खैरात करते हैं, सदका करते हैं. Clear? Similarly, not all the people are involved in taste and others. So there are many things which drawbacks with the theory of the utilitarianism with Bentham. Thank you very much.